So in this third lecture, we will do some more problems based upon the aromaticity. As in the last two previous lectures, I discussed about the hybridization deeply and then applied the hybridization concept to find out whether the given compound is aromatic, anti-aromatic or non-aromatic. So in this lecture, I will take some more examples to explain the aromaticity concept more deeply. So let's start with these organic compounds. So first organic compound is this. And the second one is like this. It's a dication. Third one is say nitrogen with hydrogen, the 6-member ring. Is an example of heterocyclic compound. And the fourth one is with both nitrogen present in the 6-member ring. So now these are the 4 compounds. Now we will find out whether these compounds are aromatic, anti-aromatic or non-aromatic. So we will apply the concept of hybridization जैसे हमने last lecture में सीखा था. So first we will apply the concept of hybridization to find out the hybridization of each and every element of the ring. Like take the first example. So now in this case, all the atoms, this carbon, this carbon, this carbon, there are 4 carbon atoms, all are sp2 hybridized. And according to our exceptional rule, this oxygen has a lone pair of electron and is attached to sp2 hybridized carbon, so it is also sp2 hybridized. It means one lone pair of oxygen that is present in p orbital, other lone pair is present in sp2 hybridized orbital. Same for this oxygen, one lone pair is present in p, another is present in sp2 hybridized orbital. Both are perpendicular to each other. The electrons in the sp2 hybridized orbital, they can't participate in the resonance because they are perpendicular to the p orbital. ये हमने पहले पढ़ चुके हैं last lecture में. So इस कार्बन का p डबल बॉन्ड बना रहा है, इस कार्बन का p भी डबल बॉन्ड बना रहा है. तो ये हमारे टोटल p जो हैं, अगर आप इनको काउंट करो, now how many p electrons are there? 1 2 3 4 5 6 7 8. So there are 8 pi electrons. So according to rule, it is our anti-aromatic compound. Now move to second. In second compound, all the carbon atoms forming double bond are sp2 hybridized, and the carbon carrying positive charge, that is one hydrogen here, one hydrogen here. So both these carbons, they are also sp2 hybridized according to the rule. There are 3 covalent bond or sigma bond with no lone pair. So overall we can say that all the atoms in this ring are sp2 hybridized. Now count the number of p electron. So this double bond has a 2p electron, this double bond has a 2p electron, this double bond has a 2p electron. So there are overall 6 pi electrons present. So overall compound is flat because all the atoms are sp2 hybridized. Okay, this carbon, that is also sp2 hybridized, and this carbon is also sp2 hybridized. So overall compound is flat, completely conjugated with a 6 pi electron. It means this compound is aromatic. Move to third. In third compound again we have 2 heteroatoms present in the ring. One is oxygen and second is nitrogen.
So the hybridization of oxygen, that is sp2, hybridization of this nitrogen according to our exceptional rule is sp2. So now count the number of p electrons. This one pair is present in sp2, second pair is present in p. नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है दैट इज प्रेजेंट इन p ऑर्बिटल, बिकॉज उसने अभी तक डबल बॉन्ड नहीं बनाया तो उसका जो लोन पेयर है वो p में ही प्रेजेंट है. इस कार्बन का यहाँ पे p और इस कार्बन का एक p इधर, इसका p और इसका p. तो नाउ काउंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन p ऑर्बिटल. सो देयर आर 1 2 3 4 5 6 7 8. So it's an 8 pi electron. So according to rule, it is a anti-aromatic compound. Okay, now move to next one more example. Now in this case, we have two nitrogen atoms and both nitrogen atom has a lone pair. Now we have to see whether this lone pair is present in which orbital. What is the hybridization of this nitrogen is sp2. What is the hybridization of this nitrogen is sp2. And I think there must be one hydrogen attached with this nitrogen to complete its covalency. So now this is a full compound. So this lone pair of electron is present in p orbital. This lone pair of electron is also present in p orbital. And there are 1p of this carbon, 1p of this carbon and 1p of this carbon. Again we have total 2, 4, 6, 8 pi electron. So it means this molecule is also anti-aromatic. Now we will move to one next example. So the next example is like this. Now we will see whether this molecule is aromatic, anti-aromatic or non-aromatic. Now what is the difference between this and this? It will be clear after we find that in which orbital these lone pair of electrons are present. Now what is the hybridization of this nitrogen is sp2. What is the hybridization of this nitrogen is also sp2. Now अब क्या है कि इस नाइट्रोजन ने डबल बॉन्ड बना रखा है. इट मींस इसने अपना p ऑर्बिटल यूज कर लिया. तो इट मींस दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज प्रेजेंट इन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल. ये डोनेट भी कर सकता है, प्रोटोनेशन भी हो सकती है आसानी से. एंड सेम फॉर दिस नाइट्रोजन, दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम. एंड बिकॉज इसने भी अपना जो p है वो डबल बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ पे यूज कर लिया. तो इस कार्बन का p यहाँ आ गया, इस कार्बन का p इधर, तो 2 p इस डबल बॉन्ड के. तो आप देख रहे हो कि इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन p ऑर्बिटल 6 हैं. तो इट मींस दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक. नाउ इन दिस वे इफ वी actually know the hybridization concept deeply, you will be you can easily find whether which orbital the lone pair of electron is present. Now, what is the difference between these two? Here the lone pair is present in p, and lone pair of this electron on nitrogen is also present in p orbital. So means these molecules, the lone pair is not easily available. Overall, this molecule is anti-aromatic. It is not a stable one, but still the lone pair of nitrogen, this nitrogen is present in sp2 hybridized orbital. How will you find whether the lone pair is present in p or sp2? तो क्या देखना है आपने कि अगर उस नाइट्रोजन ने पहले से डबल बॉन्ड बना रखा है तो इसका मतलब है उसका जो लोन पेयर है वो sp2 में. अगर उसने डबल बॉन्ड नहीं बनाया तो इसका मतलब है उसका लोन पेयर है जो वो अभी तक p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है. तो ये आगे कुछ और एग्जांपल्स हैं. तो अगर आपने पहले 2 वीडियो अच्छे से देखी हैं तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा. नहीं देखे तो अभी भी आप देखो, फिर ज्यादा क्लैरिटी होगी कंसेप्ट्स की. तो अभी कुछ और एग्जांपल्स हैं. जैसे अब मेरे पास है बहुत ही बेसिक सी एग्जांपल, साइक्लोप्रोपीन
इसी का ही मेरे पास है कटायन और इसी का ही मेरे पास है अनायन। ओके, दूसरा जो 5 मेंबर रिंग लेता हूं मैं, तो साइक्लोपेंटाडाइईन, इसी का ही हम ले लेते हैं कटायन और इसी का ले लेते हैं अनायन। तीसरा हम ले लेते हैं साइक्लो हेप्टाट्राइईन, इसी का हम ले लेते हैं कटायन और इसी का ही लेंगे अनायन। तो ये कंपाउंड्स हैं। अब देखना इनमें एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक के अलावा और कैसे क्वेश्चंस बनेंगे वो भी हम देखेंगे साथ साथ। तो ये हमारे पास 9 कंपाउंड्स हैं। पहली सीरीज है साइक्लोप्रोपीन की, दूसरी है साइक्लोपेंटाडाइईन की और तीसरी है हमारे पास साइक्लोहेप्टाट्राइईन की। तो बहुत इजी है इसमें ये फाइंड करना कौन सा मॉलिक्यूल एरोमेटिक है और कौन सा मॉलिक्यूल हमारा नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक है। जैसे फर्स्ट देखें, ये जो कार्बन है इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो ये जो कार्बन है आपकी ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इसका मतलब है ये नॉन एरोमेटिक है, बिकॉज sp3 का मतलब हुआ कि ये मॉलिक्यूल जो है ये फ्लैट नहीं है। ऐसा ही इस केस में है। अगर हम 5 मेंबर रिंग में जाएं तो ये भी हमारा नॉन एरोमेटिक, और अगर हम 7 मेंबर रिंग में जाएं तो ये भी हमारा नॉन एरोमेटिक। तो ये तीनों नॉन एरोमेटिक है बिकॉज ये फ्लैट नहीं है, ये कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहे। साइक्लिक तो है लेकिन दे आर नॉट फ्लैट, तो इसी वजह से ये मॉलिक्यूल जो है दे आर नॉन एरोमेटिक। कम टू दी सेकंड, कटाइंस। अब इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है इस कार्बन की वो sp2 हो जाती है। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन पहले से sp2 है बिकॉज इट इज फॉर्मिंग अ डबल बॉन्ड, इज डायरेक्टली अटैच्ड विद 3 एटम्स। So there are now 1p and 2p, so 2 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो ये हमारा क्या हो जाता है एरोमेटिक। कंप्लीटली कंजुगेटेड है बिकॉज तीनों के तीनों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, मॉलिक्यूल फ्लैट है। अब इसकी बात करें, इसमें भी ये ऊपर वाली कार्बन sp2 हो जाती है, तो ये चारों कार्बन sp2 है बिकॉज दे आर फॉर्मिंग डबल बॉन्ड। तो all the 5 carbon atoms are sp2 hybridized. Molecule is cyclic, flat, and completely conjugated. Now count the number of p electrons. So here we have 2p, and here we have 2p. So total 4 pi electrons. So this molecule is anti-aromatic. Now just see what is the difference. When you want to change this molecule into this molecule, that will be very feasible because you are moving from non-aromatic to aromatic compound. But now in this case, when you are moving from non-aromatic to anti-aromatic, it's not so feasible because anti-aromatic compounds are less stable than non-aromatic compounds. So in this example, we are moving from non-aromatic to aromatic, means from less stability to more stability, ultimate stability you can say. But in this case we are moving from non-aromatic to anti-aromatic, means non-aromatic still are more stable than anti-aromatic. So this process is actually not feasible. Now third case, again this hydrogen here, this carbon is sp2 hybridized. So there are total 7 atoms and all the carbon atoms are sp2 hybridized. It means the compound is completely conjugated, cyclic, flat. Count the number of electrons, p electrons here. As we can see, there are 6 pi electrons. So this compound is also aromatic. You can move from non-aromatic to anti-aromatic easily. So in this way, when you add some base or you want to check the acidity of these molecules,
So you want to check the acidity of you want to compare the acidity of these two molecules, then you can say this molecule is more acidic than this, because these molecules can easily give H. Okay. No, this molecule, when it give H, it will produce this molecule. Okay, now but first we will discuss about the aromatic, non-aromatic character of these three molecules. Then I will tell you that how many types of questions can be asked from such type of compounds, and how the aromaticity or stability be related with various aspects. First is in this case also this carbon is your sp2 hybridized. Now in this case we have 2 electrons and 2 electrons, these they are also present in p orbital. So total 4 pi electrons are there. It means this molecule become anti-aromatic. It means if you want to convert this molecule to this molecule, that is actually not possible. And if you want to change this molecule to this molecule, and that is possible. That is possible. Because we are moving from non-aromatic to aromatic, that is feasible. But moving from non-aromatic to anti-aromatic, that is not feasible. Second molecule, cyclopentadienyl anion. This carbon is sp2. Again we have 1, 2, 3, 4 and these two 6 pi electrons. So this molecule is aromatic. Now in this case, non-aromatic to anti-aromatic is not feasible. Rather this and non-aromatic to aromatic is more feasible. Now we can compare the acidic strength of these two. आगे भी एग्जांपल्स में इसकी एप्लीकेशंस में मैं डिस्कस करूंगा ये बात. अब हम अगर इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करें, विच मॉलिक्यूल कैन इजीली गिव H. अगर हम यहां से H ले लेते हैं, ठीक है, तो इट विल प्रोड्यूस दिस मॉलिक्यूल, और अगर यहां से H ले लेते हैं, इट विल प्रोड्यूस दिस मॉलिक्यूल. नाउ विच प्रोसेस इज फिजिबल? दिस प्रोसेस इज नॉट फिजिबल बिकॉज इट्स मूविंग फ्रॉम नॉन एरोमेटिक टू एंटी एरोमेटिक. So this molecule will not give H easily. When you add some base like NaH, hydride डालोगे कोई भी sodium hydride तो ये H easily. Now this molecule can easily give H because we are moving from non-aromatic to aromatic. So in this way we can compare the acidity of these molecules by using the concept of aromaticity and hybridization. Actually, last again this molecule is sp2 hybridized. This is a 7-member ring and all the carbons are sp2 again in this case. So now count the number of p electrons. So just count the number of p electrons. So there are 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pi electrons is anti-aromatic. So this process is not feasible. So it means in these molecules, when you take these 3 molecules, so जो 3-member ring है उसको हम कटायन में चेंज कर सकते हैं आसानी से, अनायन में वो चेंज नहीं होगा. जो 5-member डाइईन है इसको हम अनायन में इजीली चेंज कर सकते हैं, और जो 7-member हमारे पास ट्राईईन कंपाउंड है इसको हम कटायन में इजीली चेंज कर सकते हैं. तो अगर तीनों में से देखा जाए कि हम कौन सा ज्यादा एसिडिक है, तो वो आएगा हमारा cyclopentadiene, because we can convert it into this anion, and anion is your aromatic. So based upon the aromatic and anti-aromatic, non-aromatic character, you can decide that which process is feasible and which process is not feasible. So only you can use as a concept of aromaticity, or rather you must know the deep concept of hybridization. Then only you will be able to find whether the compound is aromatic, anti-aromatic or non-aromatic. Come to some more examples. Next. So next is some compounds. तो उसमें आगे जो example आ रही है, that is diketone. Suppose this compound is given. Actually ये एक कंपाउंड की कैटेगरी होती है, अभी मैं वो डिस्कस करने वाला हूँ 1-2 एग्जांपल के बाद. तो जैसे एक ये मॉलिक्यूल है, और ऐसे मेरे पास 2-3 एग्जांपल्स हैं
जिससे मैं आपको बताऊंगा कि हाउ वी कैन गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट दी। इनको हम बोलते हैं बेसिकली क्वासी एरोमेटिक। ये एक छोटी सी टर्म होती है क्वासी एरोमेटिक। क्वासी एरोमेटिक का मतलब होता है जब कोई चार्ज कंट्रीब्यूट करता है in order to make the compound aromatic. When charge contribute, मैं लिख देता हूं when some charge either negative or positive contribute in order to make the compound aromatic, then that is known as quasi-aromatic. अगर वो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है और कंपाउंड हो जाता है एरोमेटिक, तब उसको बोलते हैं क्वासी-एरोमेटिक। अगर वो चार्ज जो है सम चार्ज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, नॉट इलेक्ट्रॉन सॉरी चार्ज, जब वो चार्ज कंट्रीब्यूट करे और कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होता, वो एंटी एरोमेटिक हो जाता है या नॉन एरोमेटिक हो जाता है, तब तो उसमें क्वासी वर्ड आएगा ही नहीं। Quasi means only when some charge that contribute towards the aromaticity. Let's see the example. Now the first example is dicarbonyl compound. So obviously if you use the concept of this field effects, okay, some you can say electromagnetic effect, then the oxygen is more electronegative than sp2 hybridized carbon, so this bond obviously shift towards the oxygen. Generally we say this is based upon electromagnetic. We know that electronegativity of oxygen is more than carbon, then we move the double bond to oxygen and this produces a charge in this way. This produces a charge, positive charge. Now we will see whether this compound is aromatic or not. Oh, now there are 4 carbon atoms in the ring, and all the carbon atoms, they are sp2 hybridized. It means this 4-membered ring is flat, is completely conjugated. Now count the number of pi electrons. We have only 2 pi electrons. It means this compound is aromatic. It proves that our process is feasible. जैसे हम इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करते थे यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉन इस साइड ही शिफ्ट होगा, इस साइड ही शिफ्ट होगा, वो क्यों? Because oxygen is more electronegative. Now in this molecule, this positive charge that contribute to make the compound aromatic. So this type of compound is called quasi-aromatic. The concept quasi-aromatic means when some charge, either positive or negative, when some charge contribute in order to make the compound aromatic. Like in this case, we will discuss 2 ways. Either we shift the electrons toward oxygen or we shift the electrons away from oxygen. And we can draw 2 structures out of this. And then we can compare which will be feasible on the basis of our aromaticity concept. So now in this case I will put positive charge on the oxygen, which is not possible actually, but just write it. Means either you move the pair this side or you move the pair this side. There are 2 possibilities. सपोज आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट पता ही नहीं है, तो आपने ये 2 बना लिए, तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि आउट ऑफ दीज 2 विच इज मोर स्टेबल और कौन सा बनेगा? अब हम कंपेयर करेंगे इनकी एरोमेटिसिटी, कैरेक्टर कंपेयर करेंगे। तो लेट्स सी, दिस कार्बन इज sp2, this carbon is also sp2. Why this carbon is sp2? Because this carbon has a lone pair and is attached to sp2 hybridized carbon atom. Exceptional rule. Otherwise आप क्या करोगे,
आप बोलोगे कि इस कार्बन के 3 बॉन्ड हैं, सिग्मा प्लस एक उसमें लोन पेयर है, 3 + 1 4, तो ये sp3 हो गया। नो, ऐसा नहीं है। इस कार्बन के ऊपर एक लोन पेयर है नेगेटिव चार्ज और ये अटैच है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से, तो इसीलिए इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 हो जाती है। ओके, नाउ how many pi electrons are there here? We have each carbon contribute 1p, so 6 pi electrons. This compound is aromatic. Now here each carbon is sp2, forming 3 double bond, 6 and 2 8, so 8 pi electron is anti-aromatic. So here positive charge contribute towards aromaticity. So this is your quasi-aromatic. Here the negative charge contribute towards anti-aromaticity, and this is not quasi. Okay, now from these two reactions we can easily find out that this molecule can be easily changed into this, not into this, because we are moving towards anti-aromatic, that is unstable, highly unstable. So this concept is also right with respect to the electronegativity. As we know, the oxygen is more electronegative, so obviously this pi bond electrons, they moves towards the oxygen. And if we see about the resonating structure, this is highly unstable molecule because of separation of charge. The more electronegative oxygen has a positive charge and less electronegative carbon carries negative charge. This is unstable. So by 3 ways we can compare the stability of these two molecules. Out of these 3, one is your aromaticity. Then some more examples of your quasi-aromatic compounds. So suppose the second compound is this. Now we can draw the two structures by shifting this double bond either in this direction or in this direction. So when we draw two structures, one will be like this, say negative charge here, positive charge here. When this double bond moves upward and when this double bond moves downward, then we will get another structure. Here we have a negative and here we have a positive. This is negative. Now which is feasible that we can compare with the help of our aromaticity concept. Just compare the aromatic character ring wise, means iska alag karoge. So see, this carbon is sp2 hybridized. This carbon is also sp2, this is also sp2, so it has overall 2 + 2 4 pi electron. And जो नीचे वाला रिंग है इसमें भी ये p है, ये p है, ये p है और ये p है. This is sp2 hybridized, so there are also 4 pi electron. So both anti-aromatic. So overall compound is anti-aromatic. तो जब किसी कंपाउंड के अंदर 2 रिंग आ जाएं, दोनों ही एंटी एरोमेटिक हैं, तो ओवरऑल कंपाउंड एंटी एरोमेटिक ही होगा। अब इसको कंपेयर करेंगे, इसमें ये P है, ये P है, ये भी आपका sp2, तो इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एरोमेटिक हो गया। सॉरी, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, तो इसमें ये नेगेटिव चार्ज है, तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, एक P यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये भी एरोमेटिक हो गया। तो ओवरऑल ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक हो जाता है और ये कंपाउंड आपका हो जाता है एंटी एरोमेटिक। तो कैसी एरोमेटिक कौन सा हुआ, जिसमें आपका नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज कंट्रीब्यूट कर रहा है इन ऑर्डर टू मेक द कंपाउंड एरोमेटिक। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कंट्रीब्यूट कर रहा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये एग्जांपल थी। नेक्स्ट इसमें कुछ और एग्जांपल छोटी छोटी लेते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए बात। तो नेक्स्ट आपको मान लो ये दे दिया 3 मेंबर रिंग
with a double bond. तो इसको आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन को, डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करोगे। अगर आप डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन को किसी साइड भी शिफ्ट करते हो, तो जैसे मान लो इधर, तो ये क्या बन जाएगा आपका, पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर, तो इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, तो ये बन जाता है आपका एरोमेटिक, सॉरी नॉट, दिस इज एरोमेटिक, मींस पॉजिटिव चार्ज कंट्रीब्यूट टुवर्ड एरोमेटिक। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, क्वासी एरोमेटिक। ऐसे आपके पास फुलवीन की स्ट्रक्चर है, इसको फुलवीन बोलते हैं, 5 मेंबर रिंग है विद अ डबल बॉन्ड, FUL VENE. So just move this side, or you will move another side. Will you move this side, you will get this structure. Here you will get negative and here get positive. So there are 4 pi electron, it is anti-aromatic. And when you move this side, you will get this type of structure. And now we have a 6 pi electron, it is your anti-aromatic. So here the negative charge contribute toward aromaticity, but here the positive charge not contribute, it contribute towards anti-aromaticity. That is not a quasi. Next example, if we have such type of compound like this. Now आप किसी भी साइड इसको मूव कीजिए, इधर चाहे इधर, आपके पास जो बनेगा वो क्या बनेगा, आप देखोगे यहां कि मान लो आपने इस साइड मूव कर दिया, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव मीन आपका ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है, 2 + 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ये हो जाता है एंटी एरोमेटिक। ये आपका 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है, ये हो जाता है एरोमेटिक। जब किसी कंपाउंड के अंदर एक एरोमेटिक और एक एंटी एरोमेटिक आ जाए, तो वो कंपाउंड आपका ओवरऑल एंटी एरोमेटिक होता है, मींस एरोमेटिक प्लस एंटी एरोमेटिक आपका कंपाउंड क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। Then move to 5 member ring. Some more example. अगर दोनों एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक रिंग्स आ जाते हैं, तो वो तो एंटी एरोमेटिक होगा ही होगा। तो अगर किसी में एक एंटी एरोमेटिक आ जाता है, सपोज करो आपके पास एक एरोमेटिक रिंग आ जाता है, दूसरा भी एरोमेटिक है, तो ओवरऑल एरोमेटिक होना ही होना है। एंटी एरोमेटिक आ जाता है, तो वो एंटी एरोमेटिक होगा। एक रिंग आपका एरोमेटिक है, दूसरा एंटी एरोमेटिक है, तो वो एंटी एरोमेटिक होगा। एक रिंग आपका एंटी एरोमेटिक है, दूसरा नॉन एरोमेटिक है, तो वो आपका एरोमेटिक होगा। ये चीज हम यहाँ पे यूज करते चलेंगे। तो ये एक 5 मेंबर रिंग आ जाता है ऐसे, लाइक दिस। इसको अगर हम नेगेटिव चार्ज को, डबल बॉन्ड को शिफ्ट करते हैं दिस साइड, तो क्या बनेगा आपके पास, 5 मेंबर रिंग, अगेन 5 मेंबर रिंग। Here we have a positive and here we have a negative charge. So just try to find which this compound is aromatic or anti-aromatic. There are 4 pi electron, so this is anti-aromatic. There are 6 pi electron, so this is aromatic. Anti-aromatic plus aromatic, overall this compound is your anti-aromatic. Okay. Next, one more example of this type of compound. So the example is 5 member ring attached with this 3 member ring. Now shift the electrons 2 ways, either left side or right side. You can draw 2 structures. So when you move the electrons toward this side, you will get this molecule. Here we have a negative, here we have a positive. And in reverse, when you move the double bond towards your left side, you will get this molecule.
Now compare. So here we have 4 pi electron is anti-aromatic. Here we have again a 4 pi electron, again anti-aromatic. Overall molecule will be anti-aromatic. नीचे वाले कंपाउंड के अंदर in this ring we have 6 pi electron is aromatic, and in this case we have 2 pi electron is also aromatic. So overall compound is aromatic. It means your process of shifting the electron like this is feasible. This is not feasible. So you can decide in which direction your electrons will move. Now at the end of this lecture, I would like to discuss one problem of JEE Advanced 2017. तो JEE Advanced 2017 में एक क्वेश्चन था बहुत ही इजी एरोमेटिसिटी पे. तो JEE Advanced 2017 क्वेश्चन क्या था? Among the following the number of aromatic compounds are. आपने सिर्फ बताना है कि जो कंपाउंड दिए हुए हैं उसमें से कितने एरोमेटिक्स हैं. सिंगल डिजिट टाइप आंसर है इसका. तो कौन कौन से कंपाउंड दिए थे मैं वो ड्रॉ कर देता हूं फटाफट, फिर उसको हम चेक करेंगे. ये फर्स्ट था, सेकेंड, ऑलमोस्ट सबका हमने किया हुआ है तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि कितने कंपाउंड इसमें थे जो एरोमेटिक हैं. और व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये एडवांस के पेपर में क्वेश्चन आया था. तो कौन कौन सी कंपाउंड्स हैं ये मैं ड्रॉ कर रहा हूं. नेगेटिव चार्ज ऑलमोस्ट सभी हम एग्जांपल में कवर कर चुके हैं, एक दो को छोड़ के. और उसके बाद था एक और एक लास्ट था. तो इतने कंपाउंड उसने दे दिए और पूछ क्या रहा है कि इसमें से कितने जो हैं वो एरोमेटिक हैं. तो हमें बहुत ही ध्यान से आंसर देना है. देयर आर ओवरऑल 9 कंपाउंड्स. तो आपका आंसर है जो 1 और 9 के बीच में होगा. तो अभी हम देखें एक एक करके कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है. हमें फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स. तो इसमें देखिए फर्स्ट कंपाउंड जो है वो 8 मेंबर्ड रिंग है. 8 मेंबर्ड. तो इसमें इसको बोलते हैं साइक्लोऑक्टाटेट्राईन. एनोलीन वर्ड होता है एक. एनोलीन वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा. जो बिग पॉलीईन साइक्लिक कंपाउंड, इसमें बहुत सारे डबल बॉन्ड हो, जैसे ये 8 मेंबर्ड है. इसकी जो स्ट्रक्चर है वो टब शेप होती है. आपने पढ़ा भी होगा कहीं. ये फ्लैट नहीं होता. ये मॉलिक्यूल जो है वो फ्लैट नहीं होता. तो इसलिए इस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, इज अ नॉन एरोमेटिक. जो फ्लैट ही नहीं है वो नॉन एरोमेटिक. फ्लैट क्यों नहीं होता, क्योंकि इसकी शेप टब शेप स्ट्रक्चर है. एनोलीन एक कॉन्सेप्ट है जिसमें एनोलीन का कंसेप्ट इसलिए वो चेक करने के लिए कि हमारे जो हकल्स रूल है वो कहाँ कहाँ काम करता है, कहाँ कहाँ नहीं करता. उसके बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा. तो कम टू सेकेंड हमने कर लिया. इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये भी हमारा क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक. थर्ड कंपाउंड इसमें 2 हैं, 1 2, ये sp2 है और ये हमारा एरोमेटिक हो जाता है क्योंकि इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है. तो हमें 1 मिल गया एरोमेटिक. नेक्स्ट मूव करेंगे तो ये कार्बन और ये कार्बन आपकी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. नो यूज. दिस कंपाउंड इज योर नॉन एरोमेटिक. फ्लैट ही नहीं है. इधर आ जाते हैं. इसमें आपके पास सभी एटम्स हैं तो sp2, लेकिन इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं हमारे पास 6. लो एक और एरोमेटिक मिल गया
6 pi electron, so this is also your aromatic. नेक्स्ट पॉजिटिव, इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये आपका हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। हाँ, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये आपका एक और एरोमेटिक हो जाता है। देखेंगे 2 रिंग बने हुए हैं, फर्स्ट रिंग में देखो आप 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये आपका एरोमेटिक है। सेकंड रिंग में कुछ sp3 हाइब्रिडाइज एटम भी है, तो ये आपका नॉन एरोमेटिक है। मैंने क्या बताया था, एरोमेटिक प्लस नॉन एरोमेटिक ये एरोमेटिक होता है। यहां पे गलती हुई थी ज्यादातर बच्चों की। और लास्ट कंपाउंड में देखिए आप, इसमें सभी एटम सभी कार्बन जो है वो sp2 है, और डबल बॉन्ड अगर काउंट करो टोटल तो हर एक में 2 p है, तो 2 4 6 8 10 12 14 पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें। तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन 4n प्लस 2 को फॉलो कर रहे हैं, तो ये भी आपका कंपाउंड क्या हो जाता है, एरोमेटिक। तो अब इसमें एरोमेटिक कंपाउंड को काउंट कर लेते हैं। एक तो हमारा एरोमेटिक ये रहा, एक हमारा एरोमेटिक ये रहा, 2 तीसरा हो जाता है, चौथा भी एरोमेटिक है, और ये भी एरोमेटिक है, तो इसका आंसर हो जाता है हमारा 5। सो नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, इसका आंसर था 5। तो ये था क्वेश्चन जेईई एडवांस 2017 का। नेक्स्ट लेक्चर में हम और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा डीपली जाएंगे और एप्लीकेशंस देखेंगे कि एरोमेटिसिटी पे ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, उसने सीधा पूछ लिया एरोमेटिक है या नहीं। थोड़ा सा बिना इसकी कुछ एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस इसके बेस पे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए इतने काफी है। थैंक यू।